So friends, now in this video we will try to learn that how can we add mathematical equations or mathematical expressions to a quiz. For this you have to add one Chrome extension, that is Equatio. तो equation ਨੂੰ add ਕਰਨ ਲਈ you type chrome.google.extensions to your search engine. Go to Chrome Web Store और सर्च कमांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇਕੁਏਸ਼ੀਓ EQUATIO after this equatio is already added to my Chrome, so it gives me a message to rate it. पर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ add to Chrome ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ add to Chrome ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, then this extension will be added to your Chrome. Coming back to our Google Forms, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡ ਟੂ Chrome ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ Chrome ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ। You will be able to see your extension in this icon of extensions on the right side of the address bar. Equatio Math Made Digital. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, go to question. Suppose I want to write that find the correct answer. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, this is for the equatio, insert math, click here. जो मैथमेटिकल एक्सप्रैशनस हैं वो ਤੁਹਾਡੇ एज एन इमेज ऐड ਹੁੰਦੇ ਹੈ। सो नीचे ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਏਸ਼ੀਓ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡਸ ਹਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਡੀਟਰ। ਸੋ ਆਈ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਡੀਟਰ ब्रैकेट x plus y bracket close and square is equal to, click on insert math, and it will be inserted as an image. इसी तरह जो तुसी options विच लिखना है, click here on option 1, click on this icon of insert math. Let us try second method to insert equation. दूसरा मेथड है LaTeX editor is there. ये थोड़ा जा एडवांस्ड है। क्लिक here x square सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं ऐसे स्क्वायर नो प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। इस साइड देखो ਤੁਹਾਡੀ इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ करेक्ट होके आ गई एंड क्लिक ऑन इंसर्ट मैथ। ये LaTeX के थ्रू से now it has been inserted. Add another option, go to insert math। एक और मेथड इच इंसर्ट करन दा है, there is handwriting recognition tool is there, click here। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। So let us try another option is x square plus y square
minus 2x y. So click on insert math and this equation has been added. ये जो 3 बटन देख रहे हो, these are for the setting के whether you want to left align it, center align it, right align या change करनी है इन्हों remove करना है. Let us see the preview. और इस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आएगा. Second way equation add ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ है. Let us try another question. कि तुसी अपने न्यू टैब ਦੇ ਵਿੱਚ टाइप करो codecogs.com codecogs.com. So this is online equation editor. Click here on equation editor. And click on equation editor. So इस ऊपर तुसी देख रहे हो कि सारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ mathematical expressions are available. Suppose I want to write a fraction. So I select this expression a upon b and write here 5 upon 6 plus again a upon b 7 upon 6 is equal to. तो नीचे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इक्वेशन तैयार होके आ गई. Now नीचे तो एक मैसेज है, you can click here on by URL. तो URL ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कॉपी कर लेना है. Control C, go back to Google Forms. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ क्वेश्चन ऐड करना है. Suppose I want to write find the value of and click here on insert image. जिस तरह से इमेज ऐड करते हैं उमें ही ऐड होएगा. And go to by URL, paste the URL and click on insert image. So this image will be this equation will be inserted as an image. Let us see the preview. First question ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ equation ਦੇ ਨਾਲ ऐड ਕੀਤਾ ਸੀ, and this is the second question which we added by codecogs.com. एक ਹੋਰ method भी है mathematical symbols ਨੂੰ ऐड ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ equations ਨੂੰ ऐड ਕਰਨ ਦਾ. This is by adding one add-on. वो add-on है Hypatia. For this you go to these 3 button, more button, click on add-ons, और G Suite Market search which तुसी पाओगे Hypatia and then click on install and this add-on will be installed. You can see Hypatia in this icon of add-ons. This is Hypatia. Now let us try to write one question using Hypatia. Click on plus button to add question. Go to add-ons, Hypatia. Okay, let us refresh it. Add-ons.
and Hypatia, and insert edit math. Continue. Hypatia is opening. सो तुम देखो हाइपेशिया ओपन हो गया और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਹਨ let us try to write one chemical equation using hypatia. For this, okay, I want to write CO2 CO, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं तो ਅਸੀਂ नीचे लिखना है for this, yes, this, select this expression CO2 plus H2O H again 2, सबस्क्रिप्ट वाला लेना है 2 and O. Now I want to put an arrow here, so click here on arrows and write here C6 C, सबस्क्रिप्ट लेनी है 6, H12 again O6 and O6 and click on create link. It will give you a link. Copy this link, copy to clipboard automatically, yeah, control C ਅਸੀਂ copy ਕੀਤਾ. Go back to our Google Forms, insert image by URL, paste the link and click on insert image. So this equation has been added. Let us see the preview. So this was our first question which we added using Equatio. This is second question which we added using CodeCogs, and this is the third which we added using Hypatia. So in this way you can add mathematical equations या expressions या chemical equations भी तुसी अपने forms विच add कर सकते हो. That's all. Thank you.